वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, माय नेम इज सुधांश शेड में कि आज सोचा तो था कि एक अर्ली मॉर्निंग स्पिन के लिए जाते हैं मुंबई में, लेकिन साला सुबह के टाइम जो बारिश है ना मुंबई के अंदर, अभी भी मौसम वैसे ही है, फुल काले बादल एंड ऑल। बट लेट्स सी कब तक हमारा लक काम करता है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू आर आस्क्ड। सबसे लोग मेरे पीछे पड़े यार, QnA बना दो, QnA बना दो। बना देंगे तुम्हारा, लो बन गया आज, तुम्हारा QnA बन जाएगा आज। सिग्नल पे रुके ही है तो एक आधे क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। T.Raj_07 says favorite bike and moto vlogger. My favorite bike is going to be this one only, the FZ25. For sure, my favorite bike is this. Favorite moto vlogger, there are a lot of moto vloggers that I follow. Like there is Mumbaiker Nikhil, then there is MSK, JS Films, and there is a new YouTuber from Mumbai. His name is Anurag Salgaonkar. Please go and check him out guys, उसका content बहुत सही है. Get my inspiration from him. He's seriously a very good vlogger. So yeah, these are some of my favorite vloggers and favorite bike is going to be this. क्योंकि अभी तो मैं यही चला रहा हूँ, तो I don't know about any other bike, but for now it's going to be a beautiful FZ25. So yeah, गीतांजलि बंगेरा, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे पूछ रहे हो तुम। Still I will answer your question. Your next trip, my next trip is going to be लेह लद्दाख। इफ थिंग्स वर्क आउट तो फॉर श्योर लेह लद्दाख का मारेंगे। और बिफोर दैट गेट वैक्सीनेटेड, फर्स्ट एंड सेकंड डोज बोथ, एंड देन ऑल्सो विल डू RT-PCR एंड देन विल गो। मतलब फुल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ जाना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उसके पहले भी छोटी मोटी ट्रिप्स तो होती रहेंगी, वो तो कभी बंद नहीं होने वाली। यस, द अल्टीमेट ट्रिप इज गोइंग टू बी लेह लद्दाख। ओह मिनी कूपर, मेरे हर एक ट्रिप के अंदर एक मिनी कूपर दिखनी है मेरे को हमेशा। It's almost 12 यार, 12 के ऊपर हो गया, 1 बजने को आ रहा है अभी, एंड आई हैवंट ईटन एनीथिंग। तो हम पहले कुछ खाएंगे और खाते खाते आपके सवालों का जवाब भी देंगे हम। मंजूर है या नहीं? This is where I came for the go-karting session as well. This is where you enter from and there is the go-kart track inside. So yes, we'll eat something here and then we will head towards Bandra. और इसके बारे में भी सोन एक व्लॉग आने वाला है on the performance and the touring capabilities of this bike. Stay tuned for that. शेजवान चीज कर दीजिए बगो। फ्रस्ट्रेटेड इंसान _ व्हेन डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब? उसके पहले मेरे को बताओ, व्हाई आर यू फ्रस्ट्रेटेड मैन? इज इट बिकॉज आई डिडंट आंसर योर क्वेश्चन फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ? वी विल टेक अवे योर फ्रस्ट्रेशन बडी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। व्हेन डिड आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल? विल गो टू माई चैनल and joined 15th March 2021. There you go, frustrated insan. I hope you are not frustrated anymore. Actually, before this, I had a YouTube channel. I was a cyclist in Mumbai, and I used to cycle around in Mumbai and used to make vlogs of it. बाद में तो मैंने वो बंद कर दिया YouTube channel. It had around almost around 10 vlogs. चला था थोड़ा बहुत, लेकिन like मेरा बचपन में वो क्रिंजी लगता है यार, बहुत क्रिंजी था मैं. So that's why I just deleted that channel and started this one. Akansha_1227 says कैसे झेल लेता है अपने भाई को, अभिनव को? हम दोनों का कैसा है कि आई थिंक दिस अप्लाइज टू ऑल द 90% ऑफ द सिबलिंग्स इन इंडिया। मेरे भाई का कैसा है कि कभी तो हम दोनों का पड़ जाता है तो हम दोनों का हट जाता है। सो अगेन अमन सावला, गुड एंटरटेनिंग वीडियोस ब्रो, मुझे भी एडिट करना सिखाओगे? फॉर श्योर. एक्चुअली I was planning to make my editing video, how I edit my videos, because my editing thingy is very simple. Like I edit on my phone only. I don't have a laptop which can support the Premiere Pro software, so that's why I just edit on my phone and it's very simple. So I will definitely make a video about that. Let's aim for 60 likes on this video and I will definitely make a video on my editing for sure. Yes, Pranay Sahai India says how to ride bike like pro. First of all, I don't consider myself as a pro rider. I guess no one should consider themselves as a pro rider, because the day they think that they are a pro rider, they will stop learning. Okay, so I guess according to me, everyone is learning every day. हर एक इंसान रोज सीख रहा है. No one is at the level of pro. Everyone is at some kind of a level, but no one is at the level which is called a pro level. Okay, everyone is learning every day. So don't consider yourself as a pro rider, then that day you will stop learning. उस दिन आपको लगेगा कि मैंने सब सीख लिया है, तो आप ग्रो नहीं करोगे. That's why don't consider yourself as a pro rider. Just keep learning every single day. Okay.
No one is a pro rider. Next, Sinophilist athlete, your inspiration. My inspiration are a lot of YouTubers actually. YouTubers, lot of speakers, YouTubers like I told before as well, Mumbai ka Nikhil, Anurag Sagaonkar is someone whom I watch a lot nowadays. So yeah, these are some of the people which inspire me. Other than that, I get inspiration from little things here. Seriously, my inspiration is not confined to some opinion leaders kind of. Yeah, those people who influence people like the actors and big YouTubers. They obviously inspire me, but other than that, my inspiration comes from a lot of other things as well. And also, I get inspiration from your comments as well. You guys inspire me to do more. Cinephilist athlete, again, your dream job. My dream job is this only, YouTube. Yes. Any job which makes me feel like doing it more. Any job which satisfies my soul more than my needs. Yeah, that is something which I consider as a dream job. Again, Cinephilist athlete, the thing you love about your brother Abhi. He's also a rider. He's a very, very great rider. He knows his shit like that. So, riding is something which I really love about my brother. His riding skills and everything, techniques and all. अभी हम निकलेंगे बैंड्रा के लिए, बट बिफोर और बैंड्रा जाते तो आपके सवालों का जवाब भी देते देते जाएंगे. Got Tina's question, next travel place. So yeah, as I told before, Gitanjali also asked me the same question. I will be going to Leh Ladakh, yes, as I told before, if things work out and everything. That's what my next travel place is going to be. राहुल मड़ावे _ मेरा नेक्स्ट मंथ लद्दाख जाने का प्लान है. मैं बाइक से जाऊँ या ट्रेन से, बिकॉज मेरे पास शाइन बाइक है. सी आई हैव सीन पीपल डू लद्दाख ऑन RX-100 ऑल्सो. ठीक है, RX-100 एंड टॉक जुपिटर, ये सब में मैंने लोगों को देखा है लद्दाख जाते हुए. सो येस, इफ़ यू कैन मैनेज दैट काइंड ऑफ एडवेंचर, आई गेस, सो येस, गो अहेड. बट द थिंग कम्स टू शाइन में FI है या नहीं है, क्योंकि कार्बोरेटेड बाइक्स जो है ना, वो थोड़ी सी सफ़र करती है ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर. आई एम नॉट श्योर, आई गेस शाइन इज़ 120 cc. I don't know, I'm not sure, correct me if I'm wrong, and it doesn't have a FI, I guess. Yeah, थोड़ा दिक्कत तो आएगा, but if it does have a FI, I don't know about the BS6 one. So if it does have a FI, then go ahead. लोगों ने RX-100 पे गया तो शाइन क्या चीज़ है यार, शाइन में तो आराम से जा सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है. अंडरस्कोर अमे हमसे पूछते हैं कि what is your dream bike? My dream bike? Yeah, I've got 2 dream bikes actually. Ducati Hypermotard is one of them, and the other one is Z900. These are the 2 bikes which I seriously love. Yeah. These are my dream bikes. _Shuds_16 asks, ट्रिप पे जाने के लिए कौन सी जगह सही रहेगा जहाँ समर में जा सके. ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस. गोवा जा सकते हो आप लोग, समर्स के अंदर अगर जाना है. गोवा इज़ देयर इज़ उदयपुर, जयपुर, एंड ऑल्सो यू कैन गो टू द साउदर्न पार्ट ऑल्सो, केरला, वो सब आप जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा रहेगा. एक्चुअली यू कैन गो एनीवेयर यार. मैं ऐसे मौसम का देख के सोचता तो नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है. सो आई थिंक यू कैन गो एनीवेयर यू वांट. तो शुड से व्हाट इज़ द ड्रीम प्लेस इन इंडिया यू वांट टू विजिट. देयर आर लॉट ऑफ ड्रीम डेस्टिनेशंस दैट आई हैव यार, लाइक माय बकेट लिस्ट, लाइक धनुषकोडी, दैट इज़ वन, एंड लेह लद्दाख इज़ देयर, एंड देन केदारनाथ इज़ देयर. बट खारदुंगला इज समथिंग विच आई सीरियसली यार वांट टू डू यार. मतलब उसके लिए दिल में अलग से जगह है खारदुंगला के लिए. इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस आर डन. बाय द वे, दीस वर द इंस्टाग्राम क्वेश्चंस. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज डू. प्रशांत DS मुझे पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू द इंस्टाग्राम पेज ऑटो अबाउट. ओके, सो फॉर द पीपल हु डोंट नो, आई हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑटो अबाउट. आई एम अ कार इंथुजिस्ट. मेरे को कार्स बहुत पसंद है, बाइक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों ही प्यार है दोनों से. So I made a page specifically for bikes and cars, like an automotive information page. So after that I started my YouTube, and because of my YouTube and also my personal Instagram page, like my Siddhant_Shetmeki, that page. So I was not able to manage like all the 3 accounts at the same time. So that's why I just stopped uploading on that one, the Autowood one, and I'm managing my personal account and my YouTube. So that's why, उसकी वजह से मेरे को उस अकाउंट का टाइम नहीं मिल पाता है. So that's the reason why I stopped uploading on that page. Anyways, let's continue with the questions. गीतांजलि बंगेरा आज सेड अपना चेहरा कब दिखाओगे. जनता को तो हम सून दिखाएंगे बिल्कुल.
एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं अभी अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ लोगों को. यू विल नो दैट रीज़न वेरी वेरी सून. बट स्टिल अगर आप लोगों को मेरा चेहरा देखना है, अगर मेरी खूबसूरती को देखना ही है तो on my Instagram and follow me first and then check out my feed. I've uploaded a few of my photos there. You can go and check them out. By the way guys, ये Q&A का वीडियो है ना, ये मैं 2 बार पहले शूट कर चुका हूँ. पहले वाले के अंदर ऑडियो ख़राब हो गया, सेकेंड वाले के अंदर मैंने अपना लेंस साफ़ नहीं किया था. अभी तो ये एकदम ठान लिया दिल के अंदर की whenever you're going out to make a vlog, first check your fucking lens. Note to self, clean your lens before going out. Next question, Priyanshu Patel said आपने GoPro कितने में लिया? So for the people who don't know, I have a GoPro Hero 9 and I bought the GoPro Hero 9 for 46,000 rupees and it was the basic version. और उस टाइम पे थोड़ा महंगा क्यों मिला मुझे? क्योंकि it was a new launch. उस टाइम पे नया लॉन्च हुआ था कैमरा. Next is a question by Deals by JP. Ninja H2 or BMW GS 1250. Okay, Ninja H2 or GS 1250. So I will go for the GS 1250 any day because I'm a kind of an adventure guy. So yes, I will select the GS 1250. Which car is your dream car and why? Okay, which car is my dream car and why? So my dream car would be the Land Rover Defender, the new one. And yes, I love that bike because again, as I told you that I'm a kind of a guy who loves adventure and stuff. So yes, my dream car is going to be the Defender. Hero 9 have wide angle lens. Yes, it does have a wide angle lens. Wide angle lens है इसमें super. It has something called as super view. So yes, इसमें अलग-अलग modes है and this is the pinnacle, guys. Just buy it. It's a pinnacle of action camera. Seriously. Dalmatian De Cruz. What tires do you run on? Okay, I have a Michelin Pilot Sports on both the wheels, the front and the back. This is the other day. उस दिन मैंने पूरा शूट कर लिया था, वापस से यार ऑडियो का सीन हो गया. It started raining and the audio just got totally glitched up and all. 2 questions बच चुके थे जिसका आंसर मुझे देना है. तो क्वेश्चन है SK Gaming की तरफ से, what are your goals being a YouTuber? By the way, nice videos. So as a YouTuber, my goals are to inspire other people, you know. This is one of the primary goals of every YouTuber, I guess. They want to inspire people. And the other reason, the other goal of me being a YouTuber is to show India, yaar. People just underestimate India like it's just nothing. I've seen a lot of people who just go outside India to explore things. But इंडिया में इतनी सारी चीज़ें ना एक्सप्लोर करने के लिए कि the whole lifetime is also not enough to explore the whole India. So yeah, the last question is from Prabhat Kumar. He says, is the FZS V3 appropriate for long riding like another city or state maybe? Okay, I had the FZ16. You might have seen, or you have seen that bike in my channel, you know, FZ16 blue one. तो वो तो कार्बोरेटेड वर्जन था. इट वाज अ 2014 वर्जन कार्बोरेटेड वन. तो यार अगर मैं उस पर पुणे मार सकता हूँ तो अनदर सिटी का तो आंसर हो गया है. तो अनदर द बाइक इज़ केपेबल फॉर डूइंग अनदर स्टेट ऑल्सो, कुछ इशू नहीं है उसके अंदर. बट कंफर्टेबल नहीं होगा. दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी कि कंफर्टेबल नहीं होने वाला. बट एडवेंचरस रहेगा यार. ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द राइडर नॉट द बाइक. कोई कोई बंदों के लिए तो टाइगर, BMW 1250 कोई बाइक कंफर्टेबल नहीं रहती. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द राइडर. दैट्स व्हाट आई थिंक. ऑल द क्वेश्चंस आर डन एंड दैट इज अ थार. एंड सो या ऑल द क्वेश्चंस आर डन नाउ. एंड if you think that any of the questions are the i20 looks nice, yaar. Good, great, looks good, seriously yaar. लगता है थोड़ा झगड़ा कर रहे रोड के ऊपर, ट्रैफिक जमा रहे. एक साइड में हो जाओ ना यार, झगड़ा ही करना है तो इतना. तू गाली दे रहा, मैं गाली दे रहा. Everything, I got my wallet, I got my phone. Where is my cameras? Oh, mounted on the helmet, dude. क्या हो गया तेरे को? क्या फूका है क्या तूने अभी कुछ? तो
So this guy just recorded me. I recorded him. Why do people do this, yaar? Don't do this. Seriously, don't do this. V220D. Oh, look at that Panamera, dude. How's the performance in this thing? The bike, super. Super? Yeah. Okay. How much did you get this for? So we got it in the start when it's less launch, so we paid 170 for it. Okay. But now the price has gone down considerably. They were I think 130 on road or 130. 130. There are new subsidiaries come into it now. This is the 450X, right? Yes, this is the X. So X. we got it when it just launched in December, I think 2020. 2020 December, Yeah. okay. That's when we got the first few bikes. Now it's become much less. Okay, okay. And now it Ola and all have launched, so I'm Yeah, that's expecting why, it to go yeah. down even more. Yeah, okay. Because they have come with a bigger battery on those. Okay, so how much is the battery on this? So this is, you get 85 kilometers per charge. 85 kilometers per charge. Per charge. Okay. Ola, I think almost 115 or 120. 120, okay. Yeah, Fine, they have fine. gone up quite a bit. Yeah. I think that's 3000 mAh. This is a 2900. 2009 mAh. Okay, okay. It's a But the super machine performance though. is superb. It's a Virgin machine. Yeah. Yeah. Look at that, beautiful. Look at that. So please sapakara sarakabat saparakarai sapakara sarakabat saparakarai sapakara sarakabat sapakara sarakabat sapakara